Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Fun with Pranita ma'am. Today's video is again for 12th Commerce students subject Economics, Chapter 2, Utility Analysis. Before we move ahead with the chapter, I would like to request you all to like my video, subscribe to my channel, press the bell icon so that you receive notifications whenever I release a new video, and yes, share as maximum as you can. So let us not waste a moment and move ahead with the chapter through PowerPoint slides. So let us begin. Introduction to Utility. A very interesting chapter and a very interesting term because I am going to explain you with a very interesting example, and that is ice cream. Yes. So here we can see two girls, one with the brown hair and second with yellow hair. So both of them, look at their expressions, have the same bowl of ice cream, that too with 3 scoops, and one say yum and becomes super happy, but look at the other one, she becomes sad. Oh, ice cream, that type of. So what do you understand looking at this situation? Ice cream is such a yummy product or such a yummy thing which everybody loves. But here this yellow hair girl is an exceptional case and she do not love ice cream. So how do you define utility? It is a measure of satisfaction an individual gets from the consumption of the commodity. So you cannot call utility as usefulness in economics. Remember students, utility and usefulness are two different things because products which may not be useful to you sometimes gives you utility. I will explain you one by one, but remember, do not use the terminology usefulness for utility. Utility can be defined as measure of satisfaction an individual gets from the consumption of commodity, or it is the want satisfying power of the commodity, or third one, measure of how much one enjoys a movie, favorite food, goods, all these things. You get bored. What do? You listen to music. So music gives you utility. You watch a movie. So watching a movie gives you utility. If you feel hungry, so your favorite food gives you utility. But that does not mean dal chawal don't give you utility. It also gives, but you may not like dal chawal as much as you love the pizza. So pizza gives you more utility and dal chawal gives you less utility. This is the difference. So I hope you are clear with the concept of utility. Moving ahead with its features. Again we will move clockwise. So the first concept is relative concept. Relative to time and place. So first I'll discuss time. This is summer season. So what type of clothes do you wear? Obviously lightweight cotton clothes so that you don't feel hot. Do you wear sweaters? Is there anybody who wears sweater? No, nobody wears sweaters. So the people who produce woolen clothes, what have they done? They have warehoused their products. They have kept it for the winter season so that when the winter season will come, they will release their products. This indicates time utility. Next is place. Alfonso mangoes are produced in Konkan. Apples are produced in Kashmir. Almonds are produced in Kashmir. But does that indicate that all the other parts of Indian world don't get these products? No, everybody get these products. How do they get it? Through transportation services. So the place utility is created by transporting goods from place of abundance to the place of scarcity. जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलता नहीं है. From there place utility is created. Next one is subjective concept. So remember those two girls? Yellow hair girl, she feels ice cream is not yum. But the brown hair girl feels ice cream is yum. तो दोनों के दिमाग के thoughts अलग अलग हैं. I love red color. My friend Susan loves yellow color. But my friend Neeta loves green color. So what does this indicate? We all have a different mindset when we look at different products. So subjective concept is differ from person to person with their mindset. So the next point is ethically neutral. I'll give you an example. Knife is used by your mama to cut vegetables. At the same time,
A person who is a murderer uses the knife to kill someone. So tell me, killing someone, stabbing someone, is it an ethical thing? Is it ethically correct? No, it is incorrect. But still, knives give utility to the murderer. At the same time, it gives utility to your mother, who uses it for a good purpose to cut the vegetables. So utility has no ethics. सही हो या गलत हो, उसका रिजल्ट अच्छा है बुरा है इज नॉट केयर्ड अंडर द टर्म ऑफ यूटिलिटी. Differs from usefulness. Now tell me, alcohol consumption, cigarette smoking, both are injurious to health. We all know. But still, some people are addicted to it. So, even if the product is not useful, people consume it because it gives them utility. Differs from pleasure. Pleasure means happiness. So, here I will give you example of medicine. मेडिसिन खाना, इंजेक्शंस लेना किसी को पसंद नहीं है. सो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. क्यों? क्योंकि मेडिसिन एंड इंजेक्शंस आर टेकन बाय पर्सन ओनली व्हेन दे आर सिक. So they want to become good with health, so they consume it even if it does not give them pleasure. Differs from satisfaction. Now satisfaction is the end result of utility, ऐसा बोलते हैं. मतलब for example, if a person who's completely thirsty, we offer them water. So why do the person actually consume water? Because water gives utility to human being. But the main point here is after consuming the water, he derives satisfaction which is much higher than utility. अब मैं ये तुमको जो बता रही हूँ, it is with context to your thirst. थर्स्टी इंसान को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा वन ग्लास ऑफ वाटर का इंस्टेड ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट थर्स्टी. हेंस सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट दैट इज डिराइव फ्रॉम यूटिलिटी. मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल. व्हेन आई आस्क यू हाउ डू यू फील आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम, तो व्हाट डू यू आंसर? मैम वेरी नाइस, मैम वाओ, यमी. ऐसे आपके रिएक्शंस होते हैं. डू यू एवर से मैम 2 kgs of satisfaction, ma'am 5 liters of satisfaction, ma'am 2 kilometers of satisfaction? Do you say like this? No. So what does this mean? Measurement cannot be done in proper quantity. It is done in adjectives. But remember, in this particular chapter, the most important part is the next that we are going to study, that is the law of diminishing marginal utility, where hypothetical measurement will be taken. उसका क्या मतलब है? यू विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट. मल्टीपर्पज. नाउ हियर आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज वाइडली यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स. जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर operating your mixer, it is used for operating all the fans, all the refrigerators, AC, even charging your mobile phone, watching a TV. So it is multi-purpose. So electricity gives you multi-purpose utility. Next is your depends on intensity of want. How much do you need it? Depends on that. For example, if you're extremely hungry, you will even love dal chawal. You won't do any natak when the intensity, भूख बहुत ज़्यादा लगी है. But if you are not hungry, what do you do with your mothers? You purposely trouble them. नहीं मम्मा आज का खाना नहीं खाना. I don't want this food. I want something tasty. I want something interesting. So this is done by you only when your want and the intensity of your want is lower. Next is it is the basis of demand. If a product gives you utility, जैसे your clothes give you utility. Obviously everybody have to compulsorily wear clothes, so it is giving you utility to everyone, so you buy them. When you feel hungry, you buy a burger, a pizza, a vada pav, samosa, pani puri. All these things give you utility. I know when I say all these items and now junk food is not allowed, you might be feeling something different. So the next concept is types of utility. So the first is form utility. Now how do we define form? सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं wood. If I do you feel wood gives us utility? Everybody will feel yes. But let me give you an example. Classroom में you sit
for lectures on benches, right? So if I just cut a log of wood and I tell you, come on, students, sit on this log of wood and start your lecturing, start writing things. Will you be comfortable to sit on a log of wood and attend a lecture? Or you're comfortable to sit on the bench, which is converted from wood? You are comfortable on the benches, right? So this is what I want to explain. Sometimes products need to be converted from one form to another, that is from raw material to finished goods, from wood to furniture. It creates form, utility. Place and time is already explained to you. I told you related to place, Alfonsos from Konkan, apples from Kashmir transported to one place to another. Here, related to time, you open your books. When do you open your books? Only during exams. So exam time, books gives you more utility. At the same time, you very well know the importance of a blood bank. Here, the blood is stored and is used for patients when they are in need. So the blood banks create time utility. Next is your service. Service. Now who are the service giving people right now? Very importantly, your doctors or the policemen who are into service industry and the teachers. Because even during this COVID-19 quarantine, we are available at your service, we are teaching you, and even not only during quarantine but all other times, people who provide their valuable services are covered under the service utility. Next is knowledge. Now this example is a simple one which I have used here. Using a computer, using a mobile phone is possible only when you know how to use it. But at the same time, any particular skill or any particular knowledge that you gain in your life, it can be used for some productive purpose and is called as knowledge utility. Next is possession. Now possession का example best है कि vegetables है for example, so they are available with the sellers, clothes are available with the sellers, jewelry is available with the seller. When a person buys, so the possession changes from the buyer to the seller. मतलब बेचने वाले से वो खरीदने वाले की हो जाती है चीज. That is called as possession utility. Now this answer, features of utility, types of utility, this is not covered as major answer in your book. So we are moving ahead to introduction to TUMU. Again, TUMU, total utility and marginal utility. I will just discuss the definition first and we'll discuss the remaining points later while discussing the while discussing the law of diminishing marginal utility. Marginal utility is the additional utility derived from consumption of an additional unit. Let's take vada pav. Okay, the best. एक वड़ा पाव खाया, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? इमीडिएटली दूसरा खाया, इमीडिएटली तीसरा खाया, इमीडिएटली चौथा खाया, इमीडिएटली पांचवा खाया. ऐसे कंटिन्यूस में इफ यू आर गिवन 5 वड़ा पाव विदाउट अ टाइम ब्रेक, तो तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे कि तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. एंड टोटल यूटिलिटी का मतलब द वर्ड टोटल मीन्स एडिशन करना, राइट? तो वही करना है. एक वड़ा पाव से कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको ऐड करोगे सेकेंड वड़ा पाव, फिर थर्ड वड़ा पाव ऐड करोगे, फोर्थ वड़ा पाव ऐड करोगे, फिफ्थ वड़ा पाव ऐड करोगे. टोटल 5 वड़ा पाव खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? दैट इज योर टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल मतलब हर एक का अलग अलग होगा, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, और टोटल मतलब सबका टोटल. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU. Now this schedule is made by me so that you understand what we mean first, and then we will start with your textbook schedule, because textbook में total utility पहले दिया है, marginal utility बाद में दिया है. But I feel understanding marginal and total later is easier, so I am giving you this example. So here they have given units of apple. आप एप्पल ले लो, वड़ा पाव ले लो, जो आपको लेना है वो प्रोडक्ट ले लो. पहला एप्पल खाने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं. नाउ आई टोल्ड यू वाइल एक्सप्लेनिंग हाइपोथेटिकल कि आपको फ्यूचर में जब TUMU पढ़ना है, DMU पढ़ना है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देनी पड़ेगी यूटिलिटी को, जबकि वो प्रैक्टिकली होता नहीं है. कभी आप ऐसे बोलते हो क्या कि 10 मार्क्स मिले फॉर ईटिंग 1 वड़ा पाव? नो, बट हियर यू आर सपोज टू गिव. बट यहाँ पे मार्क्स, केजी, किलोमीटर ये नहीं होगा. यू हैव टू यूज द वर्ड यूटिल्स.
सो यूटिलिटी मेजर होता है इन यूटिल्स। सो पहला एप्पल खाने से मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला पूरा, तुमको एप्पल फेवरेट है, बहुत बहुत अच्छा, आउट ऑफ मार्क्स दे दिए तुमने। तो पहले स्टेप पे टीयू भी उतना ही होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ना, तो कुछ एडिशन होगा ही नहीं। सेकेंड स्टेप, सेकेंड एप्पल खाने से अब तुम्हारा पेट थोड़ा थोड़ा भर रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर होगा कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट भरने आया, तो तुमने 10 की जगह पे मार्क्स दे दिया अब 8। हाँ, दूसरा एप्पल जो है वो खाने से थोड़ा 8 मिल रहा है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाता है? 10 + 8 18। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ऐसे करके हमें आगे का समझना है। आई हैव गिवन दिस टेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टीयू एमयू कैसे हो रहा है। इन द नेक्स्ट टेबल विच इज एज पर योर टेक्स्ट बुक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने टीयू पहले दिया है, बट आई हैव गिवन ऑल द क्यूमुलेटिव वैल्यूज सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। अगेन लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वड़ा पाव। फर्स्ट यूनिट खाया, 10 था मार्जिनल यूटिलिटी, 10 था टोटल यूटिलिटी। सेकेंड खाने पे दिस लॉ इटसेल्फ और दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एक्सप्लेन अस कि जितना आप खाते चले जाओगे, जितना आपका पेट भरता चला जाएगा, उतना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। इट इज वेरी नेचुरल, आपको उस चीज की वैल्यू कम होती जाती है। तो सिमिलरली सेकेंड प्रोडक्ट पे आपका MU 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ। अब ये छठे 6th यूनिट पे योर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। व्हाट डू यू मीन बाय 0? अब और नहीं खाना, बस इससे ज्यादा वड़ा पाव मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकती। दैट इज दिस स्टेप, योर पॉइंट ऑफ सटाइटी। तुम्हारा पेट पूरी तरीके से भर गया है, इसके आगे तुम नहीं खा सकते। जस्ट इन केस किसी ने जबरदस्ती खिला दे, नहीं खाना ही पड़ेगा, बस खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, तो व्हाट हैपेंस? You literally sometimes start hating that product. You don't feel like having that product again. या in practical language कभी कभी तुमको इतना ज्यादा खाने से you vomit. What is that vomiting? Your utility becomes negative. So when you evaluate total utility of all the units, you can see we have started adding 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक स्टेज आएगा जब एक के बाद दूसरा यूनिट खाकर भी टोटल यूटिलिटी सेम रह जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। एंड लास्ट यूनिट पे यू कैन सी द TU इज डिक्रीजिंग एंड MU हैज बिकम नेगेटिव। रिमेंबर ऑल दिस, क्योंकि DMU के लिए हमें टोटल यूटिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट MU की जरूरत है। एट दैट टाइम आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स अगेन, सो यहीं पर समझ लो। Representing the same on the graph, you are supposed to draw a horizontal line that is x-axis। एक सेंटीमीटर के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, क्योंकि हमारे 7 कमोडिटीज है, यूनिट्स है कमोडिटी के, और हमारा कमोडिटी हमने एज्यूम किया वड़ा पाव, विच यू नीड नॉट राइट हियर। द वर्टिकल लाइन दैट इज द y-axis, our maximum utility that we have found was around 30 and 32। सो इस हिसाब से मैंने 4 के टेबल के हिसाब से 4 8 12 16 यहाँ पर ले लिया है एज TU एंड MU। सो लेट अस स्टार्ट मार्किंग। फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम था, सो यहाँ पे आया 10 बिटवीन 8 and 12। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट खाने पे MU कर्व नीचे जा रहा है, TU आराम से ऊपर जा रहा है। एट दिस स्टेप दैट इज द 6th यूनिट, मैंने कहा था ना जब तुम्हारा पेट पूरा भर जाता है, MU कितना बना? 0। इसलिए देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व, इट हैज टच्ड x-axis बिकॉज 0 यहाँ पर रहता है। एंड ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे तो TU कर्व फ्लैटन हो गया। फ्लैटन मतलब पैरेलल टू x-axis। देखो ये चीज 5 और 6 के बीच में जो लाइन है वो स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल, सो इट इज पैरेलल टू x-axis, और MU कर्व हैव टच्ड x-axis। एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द 7th यूनिट कंज्यूम होने पे MU नेगेटिव हो जाता है, तुम पूरे थक जाते हो वड़ा पाव खाने से। सो दिस पर्टिकुलर शेडेड पॉट इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी। एंड तुम TU को देखो, MU नेगेटिव होने की वजह से TU कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप? लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट यूनिट पे बोथ आर सेम, लेटर once the consumer start consuming further products, your total utility increases, marginal utility decreases। at a particular stage जहाँ पे मैंने बोला था पेट भर जाएगा, MU become 0 and TU is the highest। next stage पे after consumption more of it, that is the additional unit of it, what is the result? MU becomes negative,
and TU starts declining. So ये nature of curve में मैंने तुमको पहले ही समझाया था. Now they are explaining us the zero MU indicates point of satiety. मतलब at this particular point a rational consumer should stop consumption क्योंकि तुम्हारा पेट पूरा भर चुका है. No additional unit is required. But still due to any other cause if you consume that additional unit it will give you dissatisfaction or negative utility from the product. This is the relationship between TU and MU, and we have come to the conclusion of this particular relationship, and we are moving to the important answer which is going to give you 8 marks in your exam, that is the law of diminishing marginal utility. Here I am going to explain you the steps in which perfectly you are supposed to write the law, introduction to the law, statement of the law, schedule with explanation जो हमने already कर लिया है while TU MU, graph with explanation हमने already कर लिया है while TU MU, assumptions of the law, exceptions of the law. Later you also have criticisms and limitations of the law, but वो इतना ज़रूरी नहीं है from the point of view of exam. These things are very important, and this is the way you are supposed to write your answer when you are asked to state and explain the law of DMU. ये steps compulsory follow करना है, please note it, and I am going to explain you in the same steps. First, introduction to the law. It was proposed by Professor Gaussen, remember this objective के लिए भी, but it was detailedly explained by Alfred Marshall, who is the person who have popularized complete microeconomics in his book Principles of Economics in the year 1890. Statement of the law. Remember, this is the first law of your book. Your statement should always begin with according to Alfred Marshall, other things remaining constant. According to Alfred Marshall, other things remaining constant. कोई भी law होने तो ये same रहेगा. नीचे का statement is the statement of DMU. The additional benefit which a person derives from a given increase in his stock. हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से द एडिशनल बेनिफिट मीन्स फर्स्ट यूनिट पे कितना था, सेकेंड पे कितना था, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल यूनिट. हम सिर्फ एमयू के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक. मतलब से फर्स्ट कमोडिटी, सेकेंड कमोडिटी, थर्ड ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, वो कम कम होते जाता है विथ एवरी इंक्रीज. मतलब 1 पे सबसे हाईएस्ट होगा, 2 पे कम होगा, फिर 3 पे और कम हो जाएगा, 4 पे कम हो जाएगा, 5 पे और कम हो जाएगा. दिस इज योर लॉ ऑफ DMU. यू हैव टू बाय हार्ट दिस वर्ड टू वर्ड. यू कैनॉट चेंज दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ DMU. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. 1 2 3 4 5 6 7 10 8 6 4 2. एक दो 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 कम करना है, कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं. आई होप यू ऑल नो 2 स्टेबल. सो रिवर्स ऑर्डर में 10 8 6 4 2 0 and -2. So you are supposed to explain this schedule by saying units of commodity X are 1 to 7 and marginal utility is represented in utils. So on the consumption of the first commodity, MU is maximum, that is 10 utils. On the consumption of second, third, fourth and fifth commodity, MU starts decreasing. Second line होगा MU starts decreasing. Sixth unit पे MU becomes 0 and seventh unit पे MU becomes negative. Only this much of explanation is required. Next is graphical representation. तो तब हमने TU MU दोनों बनाया था, यहाँ पे तुमको सिर्फ MU का बनाना है. So maximum MU 10 है, तो 2 4 6 8 10 0. एंड यहाँ पे मैक्सिमम यूटिल्स कमोडिटी के यूनिट्स है 7. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो यू कैन सी 10 8 6 4 2 0 एंड -2, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व? MU कर्व slopes downwards from left to right. MU curve slopes downwards from left to right. You can see here. And this shows diminishing marginal utility. Next क्या है? MU curve becomes 0. MU curve becomes 0 and it touches the x-axis. Next क्या है? MU curve enters the negative quadrant. Enters the negative quadrant and that indicates disutility. That indicates disutility. Okay, so the next part is related to the assumptions of DMU. Now basically this term assumption itself means
these conditions are assumed to be constant or are assumed as per प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. अब ये क्यों है? अगर ये कंडीशंस को हमने कांस्टेंट एज्यूम नहीं किया या ये कंडीशंस के हिसाब से हमने लॉ को फॉलो नहीं किया तो लॉ एप्लीकेबल नहीं है. It is not applicable to things other than this. This is what it means. And with these conditions, only the law will work. This is the meaning of the term assumption. I have explained the term assumption here so that in future, whenever I explain you assumptions to any other law, remember what are assumptions. So assumptions are conditions which are to be constant for proper activation of the law, for proper application and implementation of the law. Point 1 is rationality. So the term rational means a proper sensible person. Insane log, pagal log, people who live in the mental asylum, you cannot test the law on them because they do not react properly. When you ask them how do you feel after eating an ice cream, they may react something which is not rational. Hence you are supposed to select a rational person, मतलब एक normal common इंसान. Cardinal measurement. This is clear. You are supposed to give your happiness or the feeling of utility through utils. So that is in numbers. Homogeneity. This is very important. If you eat a vada pav, then you eat some pani puri, and then you feel like, oh, I would like to have some other chaat, and then you feel like, okay, I'll have some Frankie. So when you have different type of products or different types of food items, then you keep on getting utility because every particular item have a different taste. So we are assuming homogeneity in the product. मतलब अगर आप वड़ा पाव के साथ DMU टेस्ट कर रहे हो तो कीप ईटिंग वड़ा पाव ऑल 7 टाइम्स. नेक्स्ट है कंटिन्यूटी. नो टाइम लैप्स. दिस इज व्हाट आई मीन हियर. अगर आप 1 घंटे बाद दूसरा वड़ा पाव खाओगे, 1 घंटे बाद तो भूख लगी जाती है, फिर 1 घंटे बाद तीसरा खाओगे, फिर 1 घंटे बाद चौथा खाओगे. दैट इज नॉट अलाउड. यू आर सपोज टू ईट कंटिन्यूअसली सो दैट योर स्टमक एंड योर ब्रेन रेस्पॉन्ड्स एज पर द लॉ. रीजनेबिलिटी. What do you mean by reasonable product? तुम for example people may take item or product to consume as water. So if you select water, you cannot select 1 spoon of water because that is a very small quantity of product. You will have to select 1 glass of water. This is what is reasonability. Next is constancy. Now what do you mean by constant here? Basically, the terminology of constant means to remain stable. Now, let me give you a few examples. For example, your taste, your habits, your choices, your likes, your dislikes, these are also assumed to be constant. Because, जैसे कि we have taken product as vada pav. If it is your favorite product and you are applying this law, fine. But once you come to a stage where you do not like vada pav, तो you may not give fair utils of satisfaction. मतलब जो तुम आउटपुट दे रहे हो, कैसा लगा वड़ा पाव खा के और तुम्हारी बिल्कुल नापसंद चीज है वड़ा पाव, तो you will say 0 because you just don't like it. So your likes, your preferences are assumed to be constant. कि अगर तुमको कोई चीज पसंद है जिसके ऊपर तुम लॉ एप्लीकेबल हो तो you have to keep it constant. You cannot be moody here because it is a law. Next is divisibility. Divisible मतलब products like TV, refrigerator cannot be used here because they cannot be divided into suitable quantity. Here, glass of water is a suitable quantity, 1 apple is a suitable quantity, 1 vada pav is a suitable quantity. But TV, refrigerator, they cannot be divided into quantity, so these cannot be used for the law. Next is single want. A given commodity can satisfy a single want of the person. This is what is given here. Like electricity cannot be used for the law क्योंकि वो अलग अलग तरीके से ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सो ऑल द टाइम यू विल गिव पॉजिटिव यूटिलिटी फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट. बट when it is a case of law of DMU, you are not supposed to assume products which give you multiple satisfactions or multiple utility. So this completes our assumptions.
Moving to our exceptions. So let me first explain you the terminology exception. Exception to the law means ये जो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, इन चीजों के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता? तो फर्स्ट लेट्स थिंक व्हाट इज द लॉ अबाउट. लॉ इज अबाउट इफ यू कंज्यूम एवरी एडिशनल यूनिट, आपका सेटिस्फैक्शन कम होना चाहिए. बट फर्स्ट हॉबीज जैसे लिसनिंग टू द म्यूजिक. अगर आपको कोई गाना पसंद है, एक बार सुनो आपको अच्छा लगता है, दूसरी बार सुनो आपको वो मे बी और अच्छा लगेगा, तीसरी बार और अच्छा लगेगा. यू कैन कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड और विदाउट गेटिंग डिससेटिस्फाइड. हेंस हॉबीज आर ओके. सो अवर नेक्स्ट वन इज अ माइजर. माइजर कौन होता है? कंजूस इंसान. सो हीज way of behavior is he do not like to spend money, right? और कंजूस इंसान को यहाँ पर एक्सेप्शन इसीलिए कहा गया है बिकॉज एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर सेटिस्फैक्शन. जितना पैसा उसके पास बढ़ेगा ना, उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. इनफैक्ट सिर्फ माइजर को ही नहीं, ये तो किसी को भी होगा. सो मनी एंड माइजर आर रिलेटेड. द मोर यू हैव मनी द मोर सेटिस्फैक्शन यू डिराइव. सिमिलर इज द केस ऑफ माइजर. सिर्फ डिफरेंस ये है कि मनी इज फॉर एवरीबडी एंड माइजर पर्टिकुलर एक कंजूस इंसान है जिसको पैसा बढ़ने से उसके पास और ज्यादा अच्छा फील होता है. सो ही इज एन एक्सेप्शन टू DMU. एडिक्शन सेम है. सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, दीज आर द एडिक्शंस ऑफ अ पर्सन. सो मोर यू हैव इट, मोर pleasure you derive, more utility you get from the product. जबकि law of DMU क्या कह रहा है? The more you consume, lesser is your utility. Next is power. Power again, it is a position, it is a status of a person. So the more a person becomes powerful, the more is his satisfaction from life. So it is against the law. Law कहता है the more you have a product, less is your satisfaction or less is the utility derived from it. But all these five, hobbies, miser, addiction, power, money, they give you exact reverse of the law. They say the more you have it, the more satisfaction you get in life. Last part of the chapter is criticisms of law of DMU and importance. Criticism क्या है? Criticism, the word itself tell you the meaning. It is people, the other economists who observed this law, they felt there are drawbacks in the law. So that is the criticism of the law. अनरियलिस्टिक एजम्पशन बराबर है ना. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अनरियलिस्टिक है. वो लोग कह रहे हैं कार्डिनल मेजरमेंट है, वो भी अगला लिखा है यहाँ पर. तो अनरियलिस्टिक, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, MU ऑफ मनी. कभी हो सकता है कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहे, वो भी यहाँ पे एज्यूम्ड है. सिंगल वॉन्ट, अब ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान की सिंगल वांट हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से. जैसे एक एप्पल को ही ले लो. एप्पल का तुम पर्टिकुलर सैलेड बना सकते हो, एप्पल को तुम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, एप्पल को तुम जूस में यूज़ कर सकते हो, फिर एप्पल को अगर तुम स्मूदी कन्वर्ट करते हो. तो दिस आर द वेरियस वेज यू कैन हैव एन एप्पल. बट हियर दे से हैव एप्पल इन द डायरेक्ट फॉर्म. So all these are criticisms for the law of DMU. And the last one is the importance of DMU. So it is useful to customers, government, basis of paradox of value, and it is the basis of demand. Now why is it useful to customer? It makes you understand कि तुमको कौन से प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है और उस हिसाब से तुम उसको खरीदोगे. गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी डिसीजन के लिए वो ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी टैक्सेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, नहीं होगा. नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. The law of diminishing marginal utility help us to understand paradox of value. Here, paradox means what? Goods sometimes have different value in use and different value in exchange. जैसे कि air, water, sunshine. These three things are free for everybody. मतलब उसका value in exchange zero है, लेकिन value in use बहुत ज़्यादा है. On the other hand, gold and diamond खरीदते वक्त उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट उसका यूज़ क्या है? यू जस्ट वेयर इट ऑन ओकेजनल फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज एंड इट्स नॉट नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ, बेसिक नीड नहीं है. सो पैराडॉक्स मतलब क्या? द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स उसका वैल्यू इन यूज अलग है, वैल्यू इन एक्सचेंज अलग है. सो
Last point is basis of law of demand. Utility is indicating or creating demand for product. So that is the important of the law. We complete the chapter here. Okay, so we are at the end of this chapter. I would like to specify that your textbook have now changed the exercise questions, and as a result it has only one important long answer, that is the law of DMU, the diminishing marginal utility. So I am going to provide this answer through a PDF file through a link in the description box. Click on the link and download the file. Stay tuned for my next video. Thank you for watching. Bye bye.